वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनप। दोस्तों, मैं कुछ ट्वीट्स पढ़ा यार सोशल मीडिया पर इंडिया के जीतने के बाद, और वो ट्वीट्स ने बोला कि यार अभी तो हम अश्विन के बिना जीत रहे हैं मैचेस इंग्लैंड में, तो अश्विन का क्या जरूरत है। इनफैक्ट वो जो इंग्लैंड का एक फॉर्मर फास्ट बॉलर है, उनका नाम है क्रिस ट्रेमलेट, उन्होंने लिखा हु नीड्स अश्विन व्हेन यू हैव बुमराह। यार बाय दिस आर्ग्यूमेंट यू कैन से हु नीड्स कोहली व्हेन वी कैन विन इन ऑस्ट्रेलिया विदाउट कोहली। तो कोहली का जरूरत ही नहीं है, ऐसा थोड़ी बोलते हैं यार। This is a very flawed argument. This is a very illogical argument. This is a very wrong argument. Just because you are winning in England without Ashwin, it doesn't mean that you don't need Ashwin. Just because you won in Australia without Kohli, it doesn't mean that you don't need Kohli anymore. You need Kohli in your team because he's simply the best batsman in Team India. That spot belongs to him. No one else can take that spot. Yes, you won matches in Australia without Kohli. Job very well done. But that doesn't mean that you can make Kohli sit out. You can drop Kohli. You have to give Kohli his rightful place as the best batsman in the team. Similarly, you're winning in England without Ashwin, job well done. But you have to give Ashwin that spot, the spot that he deserves, because he's not just the best spinner in Team India, he's the best spinner in the world. There is no argument about this fact here. तो उनका जो राइटफुल प्लेस है उनको देना चाहिए। तो ये जो पूरा आर्ग्यूमेंट चल रहा है सोशल मीडिया पर, यार अभी हम मैच जीत रहे हैं अश्विन के बिना, तो अश्विन का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलते यार। दिस इज अ वेरी रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। ऐसा तो तभी भी बोलना चाहिए था, अभी हम ऑस्ट्रेलिया में जीत रहे हैं अजिंक्य रहाणे के कैप्टनसी में, तो फिर कोहली का क्या जरूरत है यार। जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए कोहली, ऐसा थोड़ी बोलते हैं। वी हैव टू रेस्पेक्ट प्लेयर्स यार, एंड दैट इज व्हाई आई फील दिस सिलेक्शन इज वेरी वेरी इनकरेक्ट बाय कोहली और व्हाटएवर हूएवर इज टेकिंग दिस कॉल। आई टेल यू व्हाई। नंबर वन, आप जब टीम बनाते हो आप आइडेंटिफाई करते हो आपका बेस्ट बैट्समैन कौन है, विराट कोहली। नंबर टू, आप आइडेंटिफाई करते हो आपका बेस्ट पेस बॉलर कौन है, जसप्रीत बुमराह। देन आप आइडेंटिफाई करते हो आपका बेस्ट स्पिन बॉलर कौन है, इट इज आर अश्विन एंड नॉट आर जडेजा। सो यू हैव टू प्ले अश्विन, यू प्ले जडेजा ऑल्सो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ आर अश्विन. You play an extra fast bowler, but again not at the expense of R. Ashwin here. This is not how you treat a senior player. This is not how you treat a senior player. यार he has got 400 plus test wickets. It's not a joke यार. आप उनको ऐसे ही मतलब स्टॉप गैप ऑप्शन करके बना रहे हो यार. He is just an option now. हाँ, पिच बराबर नहीं है, पिच मतलब सीमर्स या पेस बॉलर्स को असिस्ट करेगा, तो फिर जरूरत नहीं अश्विन का यार, नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा बॉलर को खिलाएंगे, एक्स्ट्रा बैट्समैन को खिलाएंगे, अश्विन का जरूरत नहीं है। ऐसा तो ओवरसीज टूर में अश्विन का जरूरत ही नहीं है यार। Yeah, this is very, very wrong here. Just because you have won a match, it doesn't mean that you don't need Ashwin. It doesn't mean that your team selection is right. Had Ashwin been there in your game, in your match yesterday, England बहुत पहले ही fold up हो जाता था. Let's be honest, Ravindra Jadeja has not been spectacular. He should have taken more wickets, but he couldn't. Which Ashwin would have done. अरे 2 विकेट तो आराम से अश्विन निकाल देता था. Look at what Ashwin did, how Ashwin performed in WTC. Where Ashwin was versus जडेजा, अगर आप अश्विन वर्सेस जडेजा कर रहे हो, या फिर अश्विन क्रिस ट्रेमलेट बोल रहा है who needs an Ashwin if you have a बुमराह. बुमराह ने एक भी विकेट नहीं निकाला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, WTC में निकाला था, कितना विकेट निकाला था। आप बुमराह का विकेट टैली देखो और अश्विन का टैली देखो, विकेट टैली WTC में। दिस इज अ वेरी, आई एम सरप्राइज पीपल आर मेकिंग दिस आर्ग्यूमेंट यार। तो दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है। As much as you need Kohli in your team because he's the best batsman, you also need Ashwin in your team. Whatever the conditions, whatever the pitch, whatever the selection, just because he's not just the best spinner in India, but the best spinner in the world. By virtue of that, he should be having his place sealed in the team. He should walk into the team without any audition. Kohli का कौन सा audition हो गया जब वो वापस आए थे इंग्लैंड टूर के लिए? After taking a break in the Australian series, when he was available for selection, he walked into the team, no? Not just because he's the captain, but that number 4 position belongs to him. Is the best batsman. Similarly, Ashwin's place has to be assured. This is very, very, very silly and illogical. I don't know. I mean, God knows यार उनको 5th मैच में मिलेगा कि नहीं यार, chance to perform, to play. He could have scripted greatness in this series, Ashwin, but very, very unfortunate यार. What do I say now? किधर तो एक मीम चल रहा था यार, अश्विन विराट को बोल रहा है भाई मेरे को जाने तो दे, एटलीस्ट लेट मी सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी विथ माय फैमिली। अब यार very very disappointing selection, so to speak. Ashwin should be there because it's all about team balance. You have the best opener in Rohit Sharma. You have a good number 3 now who is getting back into form, that is Pujara. You have a solid number 4, at least Kohli is not in form, but we are hoping मैं हमेशा कहता हूँ, दिल से कहता हूँ यार, आज सेंचुरी मारेगा, कभी ना कभी तो मारना ही मारना है सेंचुरी कोहली को यार।
इतना लॉन्ग रोप तो मिला, इनको मारना है, सो वी हैव अ गुड नंबर 4. देन कीपर ऋषभ पंत इज द बेस्ट in terms of explosive batting that he does. Then when it comes to pace bowlers, you have a Bumrah, you have a Shami, but when it comes to a spinner, it has to be Ashwin. किसी और को भी ले लो, नहीं ले लो, लेकिन अश्विन का प्लेस होना ही होना चाहिए टेस्ट में. वैसे भी वनडे तो खेलते नहीं, वनडे में कहाँ रखते दिखते अश्विन आजकल, और T20 में भी नहीं, T20 में तो है भी नहीं अश्विन, तो एटलीस्ट टेस्ट में भी उनको जगह नहीं दे रहे आप, मतलब क्या बोल सकता हो यार. सो पीपल लाइक क्रिस ट्रेमलेट एंड ऑल हैव नो आइडिया. रिटायर हो चुका है, कुछ भी बकवास करता रहता है यार ट्विटर पे. यार कुछ तो लॉजिक रखना चाहिए आर्ग्यूमेंट में. हु नीड्स अश्विन इफ यू हैव अ बुमराह. एनीवेज दोस्तों, लेट मी नो योर टेक ऑन दिस इश्यू. फॉर द मोमेंट, टाटा.